Well, good evening, everyone. Welcome to zBit.com's live streaming on the zBit.com app as well as on YouTube. I'm live now. My name is Karan and I'm live on both the platforms. And I'm here today with a new topic as you know, Bitcoin stands today at just less than 71,000, and we are today gonna talk about the attack on Kharg Island. Why is Kharg Island so important for Iran? Why is it a target for United States of America? And what significance does this have? Does this have on this particular war and the cryptocurrency market in general? Right? We are going to be looking at this today, and of course, when I come here, I'm obviously coming here to make trades. I'm here to talk about the Iran Israel war and guide you about today's particular topic as well. So welcome to the live stream, everyone. I hope that people keep joining in, and then I'll just reintroduce the topic once again. I'll just wait for more people to join in so that we can begin with today's topic, that is the particular attack on Kharg Island by the United States of America on Iran, and of course, how does it affect the market? How does it affect this war, and how does it affect the price of Bitcoin? Right? ये देखेंगे आज. थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग इन. जुड़ते रहो धीरे धीरे. उसके बाद एक बार वापस टॉपिक री इंट्रोड्यूस करूंगा, बताऊंगा. मेरा नाम है करण और मैं हूं यहाँ पर लाइव. मेरे टेलीग्राम ग्रुप का भी नाम है zbit.com लाइव विद करण, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा. शुरू करते हैं लाइव का टॉपिक. आई जस्ट वेट फॉर अ फ्यू मोर पीपल टू ज्वाइन इन एंड आई ऑल्सो मीनवाइल गेट माय बैक एंड रेडी so that I can see your comments, your queries, your आइडियाज, पर्सपेक्टिव, सारी चीजें जो भी आप लोग यहाँ पे शेयर करोगे. लाइव में मैं आता हूं तो मेरा हमेशा उद्देश्य यही रहता है कि आप लोगों से बातें हो पाए, थोड़े बहुत ट्रेड्स बता पाऊं और साथ ही साथ आपको गाइड कर पाऊं कैसे आप अपने पर्सपेक्टिव को चेंज कर सकते हो, फ्यूचर्स ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, साथ ही साथ स्पॉट ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो. ये सारे टॉपिक हम लाइव में आज देखेंगे. ठीक है, 5:30 बज चुके हैं. लाइव आ चुका हूँ, 4 घंटे तक रहूंगा, बातें करूंगा बहुत सारी. और मेरे जितने भी यहाँ पर फॉलोअर्स हैं, जितने भी टेलीग्राम ग्रुप से लोग आ रहे हैं, thank you all for joining in. It's going to be a very informative session. It's going to be a really engaging session. We'll have a lot of conversations. You learn a lot of good things about cryptocurrency, a lot of things that will expand your knowledge, that will expand your experience when it comes to cryptocurrency and trading. Right? आता हूँ, ट्रेड तो करता ही करता हूँ, आपको पता ही है. लाइव पे भी बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा, ट्रेड्स बताऊंगा. सो डोंट वरी, स्टे ट्यून, जुड़े रहो. यूट्यूब पे जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी भाई यही कहना चाहूंगा कि भाई आया हूं तो बहुत सारी चीजें बता के जाऊंगा. लाइव पे जुड़े रहना, तभी सारी चीजों को समझ पाओगे, देख पाओगे. मिस कर दोगे तो फिर बाद में वेबसाइट रियल या फेक? सब रियल है सर, क्या फेक है यार? 410943, ये कैसा सवाल हुआ है यार? वेबसाइट रियल या फेक? खैर एनीवे, हर तरह के सवाल आते हैं भाई हमारी तरफ. ये जो टीवी वाला ऑप्शन है, जो स्माइली है ना, ये एक बार मिलता नहीं है यार मेरे को. यार मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे जब भी लोगों को बताना चाहता हूँ कि आई एम लाइव, वो ऑप्शन ही नहीं मिलता. तो अलग अलग इमोजी बना के भेजना पड़ता है. पर हाँ, सीधा प्रसारण जुड़ गया हूँ zbit.com लाइव पे, और सीधा प्रसारण जुड़ गया हूँ यूट्यूब पे भी, है ना. तो काफी सारे ट्रेड्स करेंगे गाइस. कल ट्रम्प यूएसडीटी पे प्रॉफिट बनाए थे, आज किसी और पे बनाएंगे. आया हूं, प्रॉफिट्स तो करके ही जाऊंगा. राइट? चलो, अब जो भी कमेंट करोगे देख पाऊंगा. 410943 आ रहे हो, जा रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो, फिर जा रहे हो.
वेबसाइट रियल है या फेक, बता देता हूँ, बिल्कुल रियल है। क्या फेक क्या है उसमें, मुझे तो समझ नहीं आया, क्या फेक, फेक के सवाल ही कहाँ से आता है। अरे यार ये कहाँ से आ जाता है। I welcome user 335504 as well. Thank you for joining on my live stream. और एक बार बस मैं अपना ट्रैकर खोल लूँ ईरान इजराइल वॉर के बारे में, जहाँ भी मैं जितनी भी इंफॉर्मेशन देखता हूँ वो वहीं पे देखता हूँ। सो आई विल जस्ट वेट, एक सेकेंड आप लोग मुझे दीजिए, स्क्रीन शेयर बंद करके एक बार इसको के रिफ्रेश कर लूँ एक बार अपना। राइट, हो गया। अब स्क्रीन शेयर दोबारा कर सकते हैं। हाँ भाई, तो बहुत बहुत स्वागत है यूजर 335504 लाइव स्ट्रीम पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो टॉपिक है वो है रिगार्डिंग द attack on Kharg Island. Why is Kharg Island so important in the context of this war between Iran, US, and Israel, and what kind of impact it can have on this cryptocurrency market, and what kind of impact it can have on बिटकॉइन, राइट। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत मेजर आज एक ट्वीट करके बताया कि उन्होंने खार्ग आइलैंड पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया है, जो कि ईरान के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो क्या हुआ है, क्या किस तरह का अटैक है, एक बार मैं आपको बताऊंगा। अपना ट्रैकर खोल लेता हूं मैं पहले, जहां से मैं सारी न्यूज देखता हूँ, ये रही एग्जैक्टली, ठीक है। खार्ग आइलैंड क्यों इंपॉर्टेंट है, सब सब जानेंगे। थोड़ा सा मुझे एक मिनट दीजिए आप। ये देखो भाई, मार्केट अभी जो है 70,000 के ऊपर है, लेकिन 71,000 के नीचे है, ठीक है। 71,000 के आसपास है, बट नीचे ही है, ठीक है। अब डिसाइसिव चीज है क्योंकि okay, so this article is very much before it was published before this attack on Kharg Island. I'll just read about Kharg Island, what kind of what kind of damage has already been done on Kharg Island, why is this so significant, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। Dark smoke was seen rising on Saturday from the direction of a major energy installation in the United Arab Emirates. This comes after the United States carried out strikes on Iran's Kharg Island oil hub. Oil hub है Bilia Minu from Nigeria. Thank you for joining our live stream. Very good evening to you. Hello, and thank you for joining on my live stream. Why is Kharg Island so important for? Okay, first I'll just show you, President Donald Trump's tweet on Kharg Island, because that is what is, you know, uh, taking away all the headlines today. It is grabbing all the eyeball. What was exactly the, tweet? We'll just read about that. Just give me a second. Just give me a second. BTC coin. Yeah, BTC is at 7750 Biliaminu. It's at 70,736, and
very very risky situation. Obviously, as we go along on this live stream, I will be guiding you about where it could be heading next. So just stay tuned on the live. I'll be guiding you. I'll be telling you where you can probably make trades, right? And if there is any good trade, I will definitely tell you to take it on my Telegram group. If you've not joined my Telegram group, you're surely missing out. I welcome user 442913 as well. And it's actually testing the breakout level. A successful retest of the triangle could confirm the breakout and lead to further bullish momentum. However, if the retest fails, the price may move back inside the triangle, leading to further consolidation. Keep a close eye on the upcoming price action development. So that is the latest on Bitcoin. I would tell you, and that would be my advice to you, that you should refrain from making any trades at this point in time, because there lacks a clear cut breakout direction at this point in time, because it is at 70,729, facing resistance all over again, just below the 71,000 mark. Let's hope it does. I know about Bitcoin very well. Okay, what do you know about Bitcoin? $150 this year. So this is actually spot trading, William. This is not. This is actually futures trading. This is not spot trading. Do you understand futures trading? 150 it could very well hit, but this is futures trading. This is not spot trading. If you want to make a trade, if you want to enter spot trading at this price, you can enter, and then you can wait for the rest of the year when it does get to 1,50,000, right? That should be the way you should go about it, right? And rather than making a trade in futures trading, right? In futures trading, it's just important for you to predict which way the market will go, upwards or downwards, right? This is what futures trading is all about. Now just give me a minute. I'll just open that tweet from President Donald Trump. I don't want to log in here. Now, very good news for all the Indians. When Bitcoin in $12, I was buying at that time. I make a lot of money very well. Very nice, very good for you. I hope that you have also, joined my Telegram group and made your first deposit as well on zbit.com. If you've not made a first deposit, you can get from my site 20,000 Pepe coin or 20,000 Shiba Inu coins absolutely free of cost. But first, you need to make a deposit, and you have to make a deposit using the below deposit option just below my live stream. Make your first deposit, then just let me know your UID on Telegram. Also join my Telegram group where I share signals every day, daily, that can earn you a lot of profits, right? Lot of good money. And if you've not joined it, do make sure that you've joined it by the end of this live session at least, right? Now we're going to be reading about Kharg Island. Why Kharg Island is so important for Iran? Why is it so important for United States to attack it? And all the things related to the war, and of course the cryptocurrency market. How is it affected because of this particular attack? Right. So I'll just show you all the map of Kharg Island, and what Kharg Island is all about, because of course it has been the center of all the news today, and it has been attacked by the United States of America today.
This is Kharg Island in particular, and US has attacked military sites on Kharg Island. Very, very important. Why is it important? I'll just start explaining now. Number one, it handles the most of Iran's oil exports, right? Around 90% of Iran's oil exports are passing through this particular island, which is the Kharg Island, right? I hope you understand 90% is a huge amount, right? And it's it's this oil that is coming from Iran's major field, which is transported by pipelines to this island and loaded onto tankers, right? Containers, right? This actually makes it the most economic lifeline of Iran. So the United States has hurt Iran right where it hurts the most, right? Can you give me Bitcoin in your wallet to my wallet account? Why would I do that? 919-83385. Thank you for joining in. User 919385. Today we are talking about Kharg Island. Why is it so important? Now, what the US has done today is that they have attacked the most important economic hub for Iran. It is one of the major oil exporting islands. 90% of the crude oil exports pass through Kharg Island in Iran, right? And if this Kharg Island actually stops operating, yeah, right, then very, very simply you can understand that Iran's oil exports will collapse very fast, very fast. All of Iran's oil exports will collapse. That's one, right? Number two, the Iranian government, of course, would lose a huge, huge part of their revenue. The money that Iran earns from oil exports will come down so drastically that actually they'll probably get bankrupt because they rely heavily on oil exports, and the US has hurt them right where it pinches them the most, right? This is where they have hurt them. They've hurt them at military sites on the Kharg Island, and it's a huge, huge turning point in this war. Favors, it shifts the balance. Already the US was dominating, and now the balance has completely shifted in the favor of the United States of America by attacking the Kharg Island, right? Now, why is it important? Second reason, it has massive oil storage facilities, shipping facilities. Huge oil storage tanks are there, tens and millions of barrels of petrol and oil and diesel, crude oil, right? Then deep waters where large super tankers can dock. Number three, infrastructure that can load multiple oil tankers simultaneously. Now, because of this, it is also considered as one of the largest offshore oil terminals in the world. So you understand how much is petrol in Nigeria now? Petrol, you mean petrol? It's 1075 Nigerian. What is your currency, right? I'll just have a look. Naira, one Nigerian naira, right? 1075 per liter Nigerian naira. That's the amount of petrol
price in Nigeria right now? I think you're from Nigeria itself, right? So you would be knowing it. Why are you asking me? It also exports Iran's Kharg Island also exports 1 to 2 million barrels of oil per day from Kharg Island via Kharg Island. So again, that becomes a very significant area, right? I welcome user 562513 all the way from Nigeria. Thank you for joining in on my live stream. We are talking today about Kharg Island. Why is it so important? And the US has attacked it. And of course, how does it affect the cryptocurrency markets as well? Right? 1 to 2 million barrels of oil per day is what is exported through the Kharg Island. Now, if it's damaged, if it is destroyed, then it means that global oil supply could also fall. It could also mean that oil prices will go up all throughout the world as well, right? That is why it is being monitored, analyzed, being looked at, and that is why people need to stop this war from getting even more nastier, more dirtier, and even more complex, as in how more and more countries start getting involved. I think there is some issue. My in my screen sharing, I'll just give me a minute. Right. Right, I hope it's better now. Iran still fighting USA. Yes, yes, they are very much fighting the United States of America. But today they have been attacked, and one of their major islands, Kharg Island, has been attacked, which is the source of 90% of their crude oil. It goes from there. There are storage facilities there. There is again, you know all the containers and ships get loaded from there. 1 to 2 million barrels, we're talking about a lot of huge amounts of oil that gets transported via the Kharga Island. And of course, storage as well as one of the largest offshore terminals in the world, as I can read, right? And it is the main economic lifeline of Iran, and that is why it is so important, right? I hope you understand the significance it has on the world. Now, Iran had been actually restricting the strait of, passing of ships through the Strait of Hormuz. Everybody knows that, which is again a very key global oil routes. 1/5 of the world's oil is exported through that particular region, through that area. And apart from that, that the attack that US has carried out today on the Kharg Island is very much because of whatever Iran was trying to do in the Strait of Hormuz, and they are trying to say now, the United States, is that if you will, keep blocking ships there and make it difficult for us in the Strait of Hormuz, then this particular attack on Kharg Island is to, force reopen the shipping lanes in, the Strait of Hormuz, and it's trying to just put a lot of pressure on Iran now because of these strikes. So, Bilyaminu, I hope that you've understood Kharg Island. I've explained it in the last couple of minutes. And I hope that you've also made a deposit today on zbit.com. If you've not, you can probably go ahead and make one. Yeah, yes, thanks. Welcome, welcome. Also, have you joined my Telegram group? It's by the name of zbit.com live with Karan. Karan's my name. zbit.com live with Karan. Have you joined my Telegram group?
because there I share a lot of trade signals through which you can earn a lot of profits, right? And what else are we here for if not profits, right? I welcome user 886511 to the live stream. Meanwhile, I'll also, you know, look at the percentage change when it comes to all these coins. AXS USDT is doing good. I'll place a 10% from my balance market order here. I've entered at 1268. Why have I entered at 1268 when it's still 1265? No, I think it's fluctuating very much at this point in time. I look at Bera USDT. Yes, have joined Telegram. Thank you, Bilyaminu, for joining my Telegram group, because I'm on my Telegram group. I share a lot of signals as well. I, Acha, by the way, yesterday, a few people missed out. There was a huge percentage change on Trump USDT, and it has, rallied to 3.93. That is again a very big improvement when it comes to I have money in my wallet zbit.com. Okay. No worries. You can start trading on zbit.com if you want. Any particular coin that you are looking at in which you want to trade today? Right. I've entered this trade of AXS USDT, and again I'm in a $1 to $2 loss, but I'll wait. I just deposited $3 yesterday night. Okay. Bilyaminu, I'll just suggest you one thing. Whenever you make a deposit, I would suggest you to, if since you are one of my very loyal users and you've also joined my Telegram group, I would just suggest you to make your deposits using the deposit option that you see just below my live stream window, right? When you come on my live, do make sure that you deposit during this point when I am live, because it will also help me a little, and it'll mean that I'll be able to properly address all your issues, your withdrawal related issues, your deposit related issues. I'll also be helping you in keeping track of your trades as well, how they are doing, how you are doing, right? Come and employ me to channel like customer service. Okay. Actually, I'm in India, so I don't know how I can employ you. Are you talking about zbit.com? I mean, you want to get employed to zbit.com? Khair, let's just have a look at trades. I've entered this at 1260. It's currently down from where I was at. I think I should probably just close this trade out a little.
I have invited a lot of my friends. Okay, very nice. Do since you've joined my Telegram group as well, do send me a message on Telegram as well. You can send me a hi on in a private message on Telegram with your UIDs, of course, because otherwise it will be very difficult for me to track. Just send me a message on Telegram. What is your Telegram name? Just let me know since you've joined the group already. What is your Telegram name? What I mean, your name on Telegram. Sure, sure. Do that. Since now you're part of my Telegram family, very, very, very warm welcome to you. Thank you for joining, and I hope that I'll be able to, guide you, give you good signals, good trades. Thank you for joining. I hope that I'll be able to help you out and make good trades. Right? Yeah. You can also send me a text on my private number as well. I mean, on my private chat, other than the group. But do share your UID first because it will be very difficult for me to track otherwise. Ula Maruwa KK. Okay. Just send me a text privately, not on the group. And also share your UID with me, your user ID, because that will help me to, or maybe I'll just send you a message. Wait, I'll send you a message. But do share your UID. I've sent you a message if you can have a look. Hmm. Cool, cool. Thanks. Thanks for sharing. I've seen your message as well. Very nice of you to, share your UID as well. Now we look to make some more trades as well. And then we'll also, look at how other, coins are doing. If you talk about the percentage change today, this is uh, there is just 9.38, 9.4. Thank you so much. No, I would like to thank you instead, right? Really thank you. Thankful to you for joining my Telegram group. Oh Lord, look at Resolve USDT, how much it has gone down in the last 30 minutes and in the last 60 minutes as well, right? Massively it has gone down.
Even BTC looks like it is stabilizing a little bit. Give me reward. Which reward? The reward. Bitcoin. William, I can't give you Bitcoin in your wallet. I wish I could do that. I mean, I can't give you Bitcoin, right? It's very expensive as well. And if I had it, I would have probably shared it as well, but I don't have it as well. The only reward that I can give you is good trades, and apart from that, I can also give you 20,000 Pepe coin or 20,000 Shiba Inu coins on your first deposit on zbit.com. And if you've made your first deposit already, then I can't give you any reward as well. $4. How can I give $4? Do you have any amount of money in your wallet? If you do have, you can use it for trades. Yeah, you have you made your first deposit yet? I think you have, right? In your wallet, right? That's nice. That's nice. You can probably make some kind of futures trading done. You can start with futures trading, or if you want to deposit, you can use the below deposit option on my live stream. Bitcoin wallet. No, in your zbit wallet, how much do you have? You can probably start a trade. 34.62 dollars. Okay, so if you want, you can deposit more, and you can also make more trades as well. If you do, you want to make any trades, or do you want to deposit more? If you want to deposit, do use the deposit option right below my live stream window. At the right bottom, you will see a deposit option. Do use that. And if you want to make a trade, you can probably look at some kind of percentage change that is there in the market. I'll also open long. I hope that Beta USDT goes up. I've entered at 6.598. Sorry, 0.6598. 98. That's very weird because I thought I was entering at 6. Anyway, it's going up, so it's good only. User A39365 from Nigeria, thank you for joining in. I welcome you to the live stream. I hope that you are tracking all the coins. I've just started a trade on Bera USDT. I've entered at 0.6598 and it is currently going upwards. It is past 6600 as well. So it's getting me, around a $1 profit. Does need to go up a lot for me to make bigger profits here, but I'll constantly keep tracking it, and I'll also look at other coins as well, how they are performing. Not much percentage change on the positive side today, if you ask me. Let's look at Bitcoin. Bitcoin is currently at 70,591.
and it has been here since the last couple of minutes. I've been here since the last 40 minutes. I had me to customer service in Nigeria. uh I mean, I don't know what's the hiring process like in Nigeria, but you can, I mean, there must be some support related option that you can find on zbit.com, the app, or maybe on the website here, right? You can probably reach out to zbit. I don't know from where. I have not done that, so I don't know about that. But I'll still look out for you. Maybe you can probably get in touch with the, the support option that you find on the app itself, the zbit.com app, because I can't, look for a job from here. नमस्ते जी, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है। क्या हाल है आपके, क्या नाम है आपके, ये भी बता दीजिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बिटकॉइन को भी ट्रैक कर रहा हूँ और बेड़ा यूएसडीटी पे भी एक ट्रेड एंटर करा है। ज़्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है, 0.50%, $50 का हो रहा है। आई वॉन्ट टू बी डूइंग लाइव। ओके, हाउ मच, what all do you want to do? You want to do live, you want to do customer support? My name is बाला जी। हेलो बाला जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। और उम्मीद करता हूँ कि बालाजी आपका भी आज दिन अच्छा जा रहा होगा। और ये देखो नीचे आ गया यार, मेरे को लॉस होने लग गया $2 का। मैंने 6598 पे एंट्री ली है, ये 6588 पे आ गया है। और पता नहीं कैसे 6598 पे एंट्री होगी, मैंने तो यहीं पर ही करी थी एंट्री। अब पता नहीं, लेकिन खैर ट्रैक करता रहूँगा इसको। प्रॉफिट में जाएगा तो अच्छा है, लॉस ज़्यादा होने वाला होगा तो बंद कर दूंगा ट्रेड को। आज लॉस नहीं हुआ तो सैटरडे नाइट बनेगी। होपफुली बालाजी, उम्मीद रहेगी कि आज कुछ प्रॉफिट्स अच्छे कमा लें, लेकिन मार्केट में जो मैं देख पा रहा हूँ आज ज़्यादा मूवमेंट नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा वोलेटाइल है। देखो वहीं पर ही अब 5 मिनट हो गए, ऐसा लग रहा है बिटकॉइन अटक ही गया है ना। तो ऐसा होता नहीं है जनरली। जनरली देखने को मिलता है कि बिटकॉइन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता रहता है, ऊपर नीचे नीचे ऊपर चलता रहता है, बट टुडे इट इज़ नॉट फ्लक्चुएटिंग दैट मच. Looks like it has got stable and is looking to maintain, and obviously there is this resistance that it is facing from above. Woohoo! 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 सही लिखा। लाइव पे तो मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा, पर आगे कभी मौका मिला तो जरूर। Bitcoin investment, you have to leave your money like 6 year or 3 year razor. Yes, yes. If you are doing spot trading, then I feel like if you buy Bitcoin today in today's times, right? I feel like you can really make a lot of money in the next few years, because I'm very much positive that Bitcoin will go towards 1,20,000, 1,30,000, 40,000 in the next few years to come.
maybe even higher, right? Very sure about that. But uh, you'll have to be patient. You'll have to, be watchful as well, because sometimes there will be times when it will come down as well, and you'll have to keep your self strong, and you'll have to be very patient. You'll have to uh, teach yourself how to be calm and just be watchful and not take out the money, close the trade, and it's about being in the game till as long as possible, and then make a lot of money with it. You know about the business very well. Okay, very nice. Good for you. Anyway, Bera USDT, $4 profit I'm earning. I entered at 0.6598. Currently it is at 6639. So it's going further up again and again. And I started investing, started trading in it because I saw a good percentage change in on the positive side in the last couple of minutes. And because of it, I've earned a $3 4 profit. So I'll be patient and I'll look to make more of it. Just have to keep my patience with me and keep looking and watching it as we go along on this live. If the Bitcoin come down, you can buy to your wallet or anytime he will raise back up. Yeah, I think even if BTC comes down, it does have the tenacity, I would say, to go back up again. That is how strong and that is how much of reputation it has built in the last couple of years, right? Yeah, I hope you bought the dip this time around. What is the price that you bought Bitcoin at? You bought it at during this particular dip that came in the month of I'm going through a loss now. It's falling heavily. See, what price did you buy BTC at? In the post that he made on Twitter, he has said that he has spared oil infrastructure for reasons of decency, but would immediately reconsider if Iran continued blocking the Strait of Hormuz. So all attempts are being made to bring Iran down to their very knees and make them suffer. When I buy Bitcoin of 10,000 in Nigeria money, 0.0020 in 6 year, I make a lot of money, $245. Very nice, very nice, very good trader you are. 2018 you bought Bitcoin in order. You haven't bought it recently.
You've not bought it this year, right? I've brought this year. Okay. Looks like Bera USDT is falling pretty heavily in the next few minutes. I'll look to close this trade out and make another trade on some other coin. But actually, at this point in time, it's very risky. Any trade that we make, 0.00049 I have in my wallet now. Okay, okay. That's not a lot of. That's the amount of Bitcoin you hold, or that is the amount of Nigerian money that you hold. If Bitcoin raise up, I will make a lot of money in my wallet. Okay. Obviously, a lot of people will make a lot of money when Bitcoin goes up. I think with Bitcoin, other coins also have a tendency to go up sooner rather than later. Also, remember that Israel is in a situation of war, not just with Iran, but also with Lebanon. And therefore, there have been, killings and people being displaced from their homes and bombings and missiles and drone attacks in Beirut as well, the capital of Lebanon. See, this is the regional death toll breakdown since this particular war started. 1,444 people killed in Iran, 773 killed in Lebanon, 14 killed in Iraq, sorry, Israel, and 6 killed in UAE, 2 killed in Bahrain, 2 killed in Saudi Arabia, 6 killed in Kuwait, 3 killed in Oman, 11 killed in US and among the US forces, and 26 killed in Iraq. And mind you, these are just numbers that uh, are official, right? The unofficial count could very much be a lot higher. So you have to consider that as well.
Two Indian flag tank. They are still fighting. Yes, yes, they are absolutely fighting, and this war doesn't look like it will stop anytime soon. It is only going to get a way more, uh, nastier, way more uglier, and way more uh, destructing, right? And meanwhile, this is news for all the Indian people to get happy about. Two Indian flag tankers carrying liquefied petroleum gas, that is LPG cooking gas, basically bound for ports in the countries west across the Strait of Hormuz. The South Asian countries Ministry of Ports, Shipping and Waterways say, and it is important to understand that this is very good news for all the Indians, because they have been facing some kind of fear that there would be a shortage of LPG gas in the country, and there have been huge queues outside LPG companies and outside LPG warehouses, where people are standing up, standing in lines and still not getting LPG cylinders for cooking at home. And this is good news. This comes as good news because Indian flag tankers are being let go in the Strait of Hormuz. That's a very big development that we have now read. Right. And on that note, I will be heading into a short break. It's been almost an hour since I came on live. I will head into a short break. When I come back, I will look at making more trades, more successful ones that can give me good amounts of profits. And I hope I'll be joined by Bilia Menu as well in the next 5-10 minutes when I'll be back. So do make sure to join in on zbit.com live with Karan. When I come back, I'll be making a few more trades. Hopefully, I'll be earning a lot of profits as well because of them. And I hope that you will be here when I join. And yeah, we'll also keep a track of the Iran, Israel, and US war, because that war is getting nastier by the day. And the US has attacked Kharg Island, one of the most important economic hubs for Iran. 90% of the oil travels through that island. We are going to be looking at that as well. And I'm going to be making sure that I give out good trades as well. So stay tuned on zbit.com live. I will be back in the next few minutes. Do not go anywhere. Keep exploring the app, keep trading, keep depositing. If you're depositing, do make sure it is on my live stream windows deposit option right below me. And Right, so I'll be just back in a few minutes. Stay tuned, do not go anywhere. It is affecting us, it is affecting everyone, right? So when I come back, I will be discussing that as well, and how is it affecting all the countries in the world. Nigeria, since you're in Nigeria, yeah, yeah, it is absolutely affecting this fight, everyone. So when I come back, I'll also come, with answers to your questions regarding this particular war. It's a huge thing that is happening in the world, and it's not a very common thing that's happening. It's a rare event, right? Wars do not happen every day. So when I come back, we'll look at that as well. Stay tuned on zbit.com live with Karan. I will be back in the next few minutes. Do not go anywhere.
Welcome back to zbit.com live with Karan. Today we are continuously tracking the prices of Bitcoin as well as a few other coins in the aftermath of the attack on the Kharg Island of Iran, one of the most significant economical hubs for Iran, because a lot of oil goes through that region. 90% of almost all the oil of Iran goes through that very region. It is stored there, it is loaded over there, and all these things uh, are loaded onto the containers there. So it's important what has happened in the aftermath of the in the aftermath of the attack on Kharg Island in Iran is of vital significance in the context of this war, because it is one of the most important oil hubs for the country of Iran. And now, since US has attacked it, it is a huge turning point, and it shifts the favor, because a lot of revenue of Iran will also be affected, and that is exactly what the United States of America wants. So today the topic is very much of about Bitcoin and how it is going to be impacted because of the attack on Kharg Island by the United States of America, and in particular, President Donald Trump, who reached out to Twitter to express his happiness at this very move of his. Right now, we are also going to make a few trades now. Let's have a look at the percentage change if there has been any, because doesn't look like there is a lot. Yesterday, people who were here with me on my live stream did look at, you know Trump USDT doing really well, almost a 55% increase to what the price was day before, right? Now, if there is any good trade, I will definitely share it on my Telegram group. zbit.com live with Karan is the name of my Telegram group. So I will definitely share it there. You obviously need to join my group first to, you know, क्या कहते हैं, be a part of that group. And if you are a part of the group, you will obviously be able to see. I just want to deposit USDT in zbit. You can deposit zbit paid USDT. It's very easy. It's not that difficult as well. I hope that once you make that deposit, you obviously get 20,000 Pepe coin or 20,000 Shiba Inu coins, one of the two, when you make your first deposit on zbit.com. But you can only get that once you use the below deposit option right below my live stream window. Once you use that to make your first deposit on zbit, I will be able to give you from my side 20,000 Pepe coins or 20,000 Shiba Inu coins. But remember, please use the deposit option below, right? And if you've not joined my Telegram group as well, you're surely missing out again. So do join that as well, because there I share all the latest updates, all the latest news, all your deposit related queries, your withdrawal related queries, all are solved over there. It is the beating heart of the Iranian oil economy.
90 to 95% of the country's crude oil exports. So right where it hurts the most, right where it hurts the most is where the United States has attacked Iran. No, I really feel like making a trade here and there, but I'm not sure as to whether BTC will, of course, go up or down, but I'll still make a trade. I will have to spend, I think, 50 here. See. 70,765 is where I've entered at. Hopefully, it will go up and go past 70,800 at least. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग यूजर 538060. एक ट्रेड एंटर करा है अभी अभी बीटीसी पे 70,765 पे मैंने एंट्री ली है. अभी 70,785 है. होपफुली थोड़ा ऊपर जाएगा तो और प्रॉफिट देखने को मिलेंगे यहाँ पे. 35x ही मैंने अपना लेवरेज लिया हुआ है. देखते हैं कितना अच्छा चलता है ट्रेड, कुछ पैसे बनते हैं इससे या नहीं बनते. बट हालांकि मैं ये बताऊंगा कि अभी थोड़ा रिस्की है मार्केट इस वक्त, क्योंकि एक क्लियर कट डायरेक्शन समझ नहीं आ रहा है इस वक्त मार्केट में कहाँ बीटीसी जा सकता है. या तो फिर 72,000 तरफ की तरफ जाएगा तो एक क्लियर कट ब्रेकआउट दिखेगा वहां से, नहीं तो नीचे भी आ सकता है. और अगर इस पीरियड में थोड़ी देर रहेगा तो 70,000 के नीचे दोबारा आने की संभावना है. सही टाइम पे ट्रेड एंटर तो कर लिया है, $1-2 का प्रॉफिट भी हो रहा है. अब लगता है कि काश 35x की जगह 40x लेवरेज लगाया होता, बट ठीक है, रिस्की था, पता नहीं था. वेट करूंगा. $3 हो गया, होपफुली और बढ़ेगा. क्या आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करा है? यूजर 538060 zbit.com लाइव विद करण. अगर नहीं करा तो बिल्कुल कर लेना भाई, वहां पर सारे ट्रेड सिग्नल शेयर करता हूँ, सारी लेटेस्ट न्यूज, सारे आपके इश्यूज जो हैं विड्रॉल रिलेटेड, डिपॉजिट रिलेटेड, कोई एक्सक्लूसिव ऑफर चाहिए, एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड चाहिए तो वहां पर बताता हूँ. और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी न्यूज जाननी है रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसी जो आपके ट्रेड्स को इफेक्ट कर सकती है, वो भी वहीं पर शेयर करता हूँ, तो प्लीज ज्वाइन कर लेना. वो ऊपर तो गया था, फिर नीचे आता दिख रहा है. और ये 1 मिनट चार्ट्स जो है ना, इनमें एक्चुअली सबसे ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलता है और सबसे ज़्यादा वोलेटाइल नज़र आते हैं ये 1 मिनट चार्ट्स को. अगर आप देखोगे तो मेरी हैबिट है कि मैं उसी को ही देखता हूँ. तो ये देखो अब, क्योंकि ये क्लियर कट आपको ना एक वो दे देते हैं सिग्नल कि भाई ये अब नीचे आ सकता है यहाँ से, और अब नीचे आएगा ही मुझे लग रहा है. जैसे मैंने एंट्री तो सही पॉइंट पे ली है, 70,765 पे ली है, तब से ऑलमोस्ट $3-4 का प्रॉफिट हो भी रहा है ना. तो देखते हैं कितनी देर रहता है, ऊपर जाता है या और नीचे आएगा. यहाँ से 404133 यूजर, बहुत बहुत स्वागत है ब्रदर आपका. ट्रेड देख लो एक दो, अगर लगते हैं अच्छा अभी बीटीसी में एंटर कर सकते हो. हालांकि मुझे लग रहा है अभी मार्केट थोड़ा रिस्की है, रिफ्रेन करो, देखो जरा भी वॉचफुल आईज के साथ देखो, ऑब्जर्व करो मार्केट कैसा कर रहा है, उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हो. भाई हमारा तो यहाँ पर काम बैठ के ये है कि हम कर सकते हैं और भी चीज़ें, है ना. मतलब हम और भी ट्रेड्स लगा सकते हैं, आपको दिखाने के लिए यहाँ पर करते हैं, लेकिन काफ़ी ट्रेड इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रेड गलत भी चला जाता है. तो इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि कई बार सिग्नल नहीं होता तभी भी हम लगाते हैं, जस्ट टू शो यू पीपल
दैट, क्योंकि देखो भाई यहाँ पर लाइफ पे कई लोग ऐसे आते हैं जिन्हें ट्रेडिंग करना नहीं आता, जिन्हें ट्रेड सेट भी नहीं करना आता, तो इसलिए उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि उनको हम सिखा पाएँ। और इसीलिए कई ट्रेड्स ऐसे लेते हैं जो कई बार नेगेटिव में भी चले जाते हैं, लॉस हो जाता है। ये वाला नहीं जा रहा है, ये $4-5 का प्रॉफिट हो रहा है। आई हैव अ $4-5 प्रॉफिट टू शो हियर, 3-4-5 डॉलर्स, बट I'm always making trades over here. So sometimes there is tendency for things to go wrong as well, because I am also human. I am not a machine, or I am not God, right? So I'm here to make good trades. If it happens, it happens. If it doesn't happen, then I take that as well. Cool. आई थिंक मैं उन ट्रेडर्स में से हूँगा जो साफ साफ ये बोल सकते हैं कि भाई ज़रूरी नहीं है कि सारे ट्रेड सही जाएँ, कई बार गलत भी चले जाते हैं। कितना भी इंडिकेटर देख लो, कितने भी आप स्टडी कर लो, एनालिसिस कर लो, पढ़ लो, न्यूज़ देख लो, फिर भी गलत हो जाते हैं ट्रेड, है ना? तो वही होता है मेरे साथ भी कई-कई बार। It's again coming towards that 71,000 mark, coming, uh, you know, near, and then heading away all over again. So I hope that it does manage to touch 71,000 and go even above, because at least that will give us a clear cut idea of where things are progressing in the next couple of hours. BTC की बात करें अगर particularly, अगेन वो क्लियर कट ब्रेकआउट साइन नहीं दिख रहा है, कंसोलिडेशन रीजन में आ जाता है, फिर रेजिस्टेंस फेस करता है, वही साइकिल दोबारा 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 चली जा रही है, चली जा रही है ना। तो एक क्लियर कट ब्रेकआउट साइन नहीं समझ आ रहा है जिसके वजह से हम बोल पाए कि भाई हाँ अब ऊपर ही जाएगा यहाँ से। वो इम्पोर्टेंट है, वो एक साइन दिखना बहुत जरूरी है, वो नहीं दिख रहा है इसलिए बोल नहीं पा रहे हैं। फिर भी $6 का प्रॉफिट अभी बनाया है। चलो भाई इसको भी क्लोज करेंगे, नीचे ही आएगा। $3-4 का प्रॉफिट हुआ, बंद करा ट्रेड। कुछ भी ऐसा रिस्की लग रहा है मार्केट इस वक्त इतना ज़्यादा कि किस पे लगाएं समझ नहीं आ रहा। एनीवे, एक बार ये बता रहा हूँ, कल जो बताया था बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसने कल मिस कर दिया है कल का लाइव सेशन, उसने तो बहुत कुछ मिस कर दिया है, स्पेशली एक चीज़ के कॉन्टेक्स्ट में। उस वो नहीं बता रहा क्या था, बट चलो बता ही देता हूँ क्या था। वो ये था कि कल ट्रम्प यूएसडीटी में भाई कम से कम 50 से लेके 55% तक का परसेंटेज इंक्रीज देखने को मिला था कॉइन में। ठीक है, तो ट्रम्प यूएसडीटी पे मैंने भी ट्रेड करा था, $200 कमाए भी थे, और मैंने स्क्रीनशॉट भी शेयर करा था अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। जिसने देख लिया होगा तो भाई वेल एंड गुड, नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज,
चलो अब और लोग आएंगे लाइव पे तो फिर बताऊंगा। 2 कॉइन में और ट्रेड करें, टैंक तारीख, तारीख को लिखिए ना। ये नो एलपीजी का एक में वो आया।
राज। जो सोचा था बढ़ जाएगा कॉइन वो बढ़ा नहीं है, जो सोचा था नहीं बढ़ेगा वो बढ़ गया है। टाउ यूएसडीटी और हाइप यूएसडीटी दो कॉइन्स में मैंने ट्रेड करा है। टाउ में मेरा एंट्री पॉइंट देखोगे तो है 237.55, वेरी बैड कि वहां से नीचे आ गया थोड़ा। और हाइप यूएसडीटी पे मेरा एंट्री प्राइस है 38.073 और ये 38.289 तक पहुंच गया है। होपफुली टाउ यूएसडीटी भी ऊपर जाएगा नेक्स्ट कपल ऑफ मिनट्स में। देखो दोनों लॉस में चले गए शायद, नहीं। 237 पे एंटर करा है, 236 पे चला गया है ये। ज्यादा मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है, मेरे को मन कर रहा है दोनों ही ट्रेड्स क्लोज कर दूं। जो होगा देखा जाएगा, ठीक है और ट्रेड लेते हैं यार, कुछ ये तो छोटे छोटे ट्रेड्स हैं, कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं दिख रहा है किसी कॉइन में। ट्रम्प यूएसडीटी अगेन। और TRX यूएसडीटी थोड़ा सा ये, अरे अरे,
हम्म, ये भी नीचे आता दिख रहा है TRX। TRX पे शॉट लगाएं क्या एक? 0.29661 पे एंटर करा है। वहां से शॉर्ट तो आया ही है बट ऊपर भी जा रहा है, ठीक है। इसको फॉलो करेंगे। शॉर्ट जा नहीं रहा हूँ मैं बहुत दिन से, मैं अप ही गया हूँ और अप पे ही मैंने बनाया, लेकिन अब वेट करेंगे, देखेंगे कैसे करता है ये। भाई प्रॉफिट्स जो है ना वो बढ़ नहीं रहे हैं किसी भी ट्रेड पे, मैं सही बताऊं तो, क्योंकि मार्केट ऐसे हो गई है जैसे मूव ही नहीं कर रही है। इट लुक्स लाइक इट हैज बिकम स्टेबल ऑलमोस्ट, which is again a very weird thing in the cryptocurrency market because ऐसा जनरली देखने को नहीं मिलता है। यहाँ हम ढूंढ रहे हैं कॉइन्स जिन पे हम ट्रेड कर सकते हैं, जो अच्छा हमें एक वो दें। और यहाँ आप देख रहे हो कि मार्केट जो है बिल्कुल ही स्टेबल होती दिखाई पड़ रही है। कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं। डेसिमल्स में मूवमेंट देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ मेरा माउस भी जो है वो हरकतें कर रहा है थोड़ी। पता नहीं क्या हो गया इसको। राइट।
वही $1-2 का प्रॉफिट, उससे ज्यादा मूव हो नहीं रही है मार्केट। लेवरेज इतना हाई सेट करके भी कुछ फायदा नहीं हो रहा है। मूवमेंट ही नहीं है, ऐसा फेज है, क्रिटिकल फेज है, इसको निकाल दो, ये फेज निकले तो समझ आएगी, एक क्लियर कट डायरेक्शन मिलेगा कि मार्केट कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। फिलहाल तो नहीं नज़र आ रहा है। ईरान यूएस वॉर पे आ जाते हैं। ब्लास्ट थर्ड ओवर जेरूसलम आफ्टर आर्मी डिटेक्ट्स मिसाइल्स फ्रॉम ईरान। Iran warns UAE residents to evacuate port areas in Abu Dhabi and Dubai. थोड़ा सा माउस में इशू आ रहा है एक। आई विल लुक टू सॉर्ट दिस आउट। एक सेकेंड आप लोग मुझे दीजिए। ईरान लॉन्चेस न्यू वेव ऑफ मिसाइल्स। गल्फ स्टेट्स पे है। User 2039691, thank you for joining in on my live stream. We are currently looking at the attacks on Kharg Island, one of the most important areas of Iran. इकोनॉमिकली बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है जिस पे अटैक हुआ है, और यूएस ने करा है, और ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा एस्केलेट कर देगा। Cool. I'll take a short break meanwhile, while we have a less number of users right now. I'll take a short break. I will be back in the next few minutes. And till then, stay tuned. zBit on only on zBit.com. I'm keeping a track of my PNL as well. The two trades that I've made on TRX USDT and on Resolve USDT, दोनों प्रॉफिट्स में बहुत हल्के हल्के, तो इनको ट्रैक करूंगा, और यूएस वॉर में क्या हुआ है लेटेस्ट वो आके देखूंगा। स्पेशली ये देखना चाहता हूं मैं, क्या टेक है ईरान का आफ्टर देयर अटैक ऑन, आफ्टर यूएसएस अटैक ऑन खार्ग आइलैंड। ठीक है, ये आई विल लुक एट। स्टे ट्यून ओनली ऑन zbit.com. We'll be back in the next few minutes. Do not go anywhere.
Welcome back to zbit.com live with Karan. Today we are looking at one of the biggest, obliteration is the word that the United States of America's president has used. Uh, just give me a second. Because they have attacked Kharg Island, one of the biggest, oil uh, 90% of the oil flows through that region. अगर ईरान की बात करें हम, if we talk about Iran, 90% of the country's oil exports go through that very region, and it has been attacked. Obliterated is the word that President Donald Trump has used in his speech, and not just that, and not in his speech, but on his Twitter. And it is of vital significance because again it will affect the revenue for Iran's regime. It will also mean that globally oil prices could you go up, if you talk about the Middle East region as well as the Southeast Asian regions as well. And so it is a huge turning point in this war, because it very much looks like US is accomplishing all the targets that it would have laid down before the start of this war, and it looks like they are very much on their way to achieving all these targets. Now what does Hamid Raza Gholamzadeh, the director of the non-profit think tank Diplo House, says about the attack on Kharg Island is what we are going to look at. He says that the bombardment destroyed only a few buildings, which Iran considers minimal and strategically insignificant. And I welcome user 595432 from the country of Myanmar. So therefore, it looks like Tehran is taking a pragmatic view of the strike's limited impact and the wider economic implications, which I'm sure are huge. What is the latest updates? We'll just have a look at that as well. Reza Pahlavi says ready for Iran transition under his leadership. The exiled son of Israel, Iran's last Shah, who was ousted by the 1979 revolution, says he is ready to lead a transition as soon as the Islamic Republic falls. Reza Pahlavi. So could it be that Reza Pahlavi, the exiled son of Iran's last Shah, is the one, installed by United States in Iran after the end of this war is announced? Could it be? We'll probably have an answer only with time. But ultimately, we have got to get answers for our cryptocurrency market that looks very stable right now, almost as if nothing is happening in the market. It's not going up, it's not going down, it almost looks like it's a sleeping giant at this point in time. It's sleeping. There is no such movement. Even the profits that I'm getting are of 2.5 dollars, 1.5 dollars. Even the losses are much in the same bracket. So I don't know what has happened to the market, but it does look like it could be a very risky phase at this point in time to trade, because a clear cut breakout direction looks like it's missing, and you don't know where the market could be heading towards in the next couple of minutes, next couple of hours. It does look like it is, it's like a sleeping giant at this point in time. There is no movement. प्रॉफिट हो रहा है तो वो 2-2.5 डॉलर, 1-2 डॉलर ऐसा हो रहा है, और लॉस हो रहा है तो भी इतना ही हो रहा है. तो ज्यादा फ्लक्चुएशंस और मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है इस वक्त, है ना. ट्रेड्स करें हैं, बट ना वो इधर जा रहे हैं ट्रेड्स, ना उधर जा रहे हैं. कोई प्रॉपर सिग्नल होगा तो अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डेफिनेटली बताऊंगा आप लोगों को. फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, नजर बना के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई क्रिप्टो का अल्टीमेटली कुछ पता नहीं होता. फ्लक्चुएट करता है तो फिर ऐसा फ्लक्चुएट करता है कि आप
देखते रह जाते हैं, सोचते रह जाते हैं, थोड़ी भी देर ट्रैक नहीं करा मार्केट को तो यूं मार्केट बदलती है और आप परसेंटेज चेंज ह्यूज ह्यूज सा देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे अमेज इसलिए कर रही हैं सारी बातें और भी ज्यादा, क्योंकि फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है, इसलिए भी अमेज कर रहा है ये, क्योंकि इतना बड़ा एक इवेंट हुआ है, खार्ग आइलैंड को इन्होंने अटैक कर दिया, उनका 90% ऑयल जो है वहां से एक्सपोर्ट होता है, मैसिव मैसिव उन्होंने एक स्टेप कदम उठाया है, और तभी भी मार्केट में इतना ज्यादा कुछ फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिल रहा है। दैट इज व्हाट इज अमेजिंग मी एट दिस पॉइंट इन amazes me at this point in time. For all those people who were here with me on zbit.com live with Karan yesterday, you must be knowing that uh, Trump USDT had a major percentage change yesterday. How can I play the game? Which game are you talking about? Brother, the real game is here. This is the real game, futures trading. If you can play this game with all the risks that are involved with it and win at it, you can earn lots of profits, lots of money, and I'm very sure that this money is, going to help you in your future as well. So this is one game that you should be getting better at rather than any other game that you're trying to focus on. I don't know which game you're talking about here, although, but if you understand futures trading and if you can somehow make profits here, it'll really help you. Now I have entered this trade at, भाई थोड़ा सा ना आज माउस में प्रॉब्लम हो रहा है, 124, सॉरी 4.006 पे एंटर करा है, नीचे है फिर से और नीचे जाता ही दिख रहा है, तो क्लोज ही कर देता हूँ मैं ट्रेड को, क्योंकि आज वो हाल नहीं है जो कल था ट्रम्प यूएसडीटी का। कल 50%, 50%, 55%, 55% मूवमेंट किस कॉइन में देखने को मिलता है भाई? कल देखने को मिला था zbit.com पे, अगर आप थे मेरे साथ लाइव पे ट्रम्प यूएसडीटी पे। No clear cut sign as to which of these coins is going to explode in the next few minutes. Very difficult to predict that at this point in time, because the market is such, right? It's very much stable at this point in time. Wait for a few more minutes, few more hours, maybe we'll see good amounts of movement here and good fluctuations as well. माउस में थोड़ा दिक्कत देखने को मिल रहा है यार आज।
Welcome to zbit.com user 4900927. Thank you for joining in again. Haven't been a lot of people here coming onto the live today because I don't know, probably people are enjoying their weekend, and maybe that's the case. But anyway, there haven't been many comments as well. So if you have any good questions, any comments, you can probably go ahead and make. I look to answer all of them. I look to answer your doubts, queries. If any questions you have regarding the market, then better. If you have any questions regarding, the war, Iran, Israel, US war, you can ask that as well. Thank you for joining in. Nevertheless, I have had some issues with my mouse today, and I'm looking to sort them out. User 872969 from Nigeria. Thank you for joining in on my live stream. If you've not made a deposit today, and if you've not made a deposit ever, then please do make a deposit using the below deposit option on my live stream, right? चला गया. बालाजी, आपको कुछ भी बोलना है, कोई सवाल है आपका, आप पूछ सकते हैं. बालाजी, क्या आपका कोई सवाल है? भाई BTC मैसिवली नीचे जाता दिख रहा है, and altcoins could follow very soon as well. I think my mouse has probably run out of batteries, if I'm correct, because otherwise there wouldn't be these issues going on. I am continuously facing issues with my mouse, and therefore I'm having to operate through my trackpad. Nevertheless, BTC, it looks like, is going down after a very long period in time. It has had stabilized a little. I'll look to make a trade here since it is. I went. Wait. मैंने लॉन्ग ओपन कर दिया गलती से, और लॉस भी फटाक से होता है ऐसे में. सॉरी. अरे यार, अब यहीं से ही ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा. User 573102, thank you for joining in. और बस इतना सा ही BTC मूवमेंट दिखाता है थ्रू आउट. मैं सही बताऊं तो ये जो है ना, 70,000 750 और 70,000 850, बस इसी के बीच में रहा है पिछले 2-3 घंटों से, सही बताऊं तो. और मूवमेंट ज्यादा देखने को मिली नहीं है, इसीलिए
अब ये तो फिर भी बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को मिल गई, इतनी भी नहीं मिली थी लास्ट की कुछ देर में, इसीलिए प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और साथ ही साथ एक बार आपको बता दूं, एक क्लियर कट डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है कि वेदर मार्केट विल गो अपवर्ड्स फ्रॉम हियर और डाउनवर्ड्स फ्रॉम हियर। पहले मतलब बाद में लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाएगी भाई, सबको पता है वो बात, है ना, बीटीसी ऊपर ही जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए कितना नीचे जाएगी ये नहीं समझ आ रहा है। तो ये क्लियर कट ब्रेकआउट अगर हमें मिलेगा, ये कंसोलिडेशन पीरियड को छोड़ेगा, रेंज को छोड़ेगा, तभी पता चलेगा, अभी तो नहीं पता चल रहा है कुछ भी। तो वेटिंग गेम है फिलहाल के लिए, किसी भी डायरेक्शन में आप कर लो आप, मैं मेरे को लगता है लॉस ही जाता दिखेगा। थोड़ा सा क्लैरिटी आए फिर उसके बाद बताया जा सकता है कि हाँ यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से नीचे आएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है देखना, वेट करो, जल्दीबाजी में कोई डिसीजन मत लो, थोड़ा सा चलने दो, मार्केट को ऑब्जर्व करो। कभी कभी नो ट्रेड इज बेटर देन अ बैड ट्रेड, है ना, जिसे कहते हैं, वही वाली सिचुएशन है इस वक्त। वेट करो थोड़ा सा, ठीक है। कोई सवाल हो मीनवाइल तो पूछ लो भाई। ईरान इजराइल यूएस वॉर चल रही है, खार्ग आइलैंड पे आज अटैक कर दिया है यूएस ने। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट एरियाज है वो ईरान के लिए, क्योंकि 90% उनकी कंट्री का ऑयल वहीं से एक्सपोर्ट होता है, वहां पर स्टोर होता है, वहां पे शिप होता है, वहां पे कार्गोज हैं, सब कुछ वहीं है ना। और वहां पे जितने मिलिट्री आउटलेट्स थे उनको उन्होंने टारगेट करा, ऐसा कहा है उन्होंने। देखो भाई अब और नीचे जाता दिख रहा है, आई फील लाइक एक डाउन पे लगा दूं क्या, रिस्की है अगेन, जहां लगाऊंगा फिर। देखो 70-700 पे आ गया है, बहुत रिस्की है भाई इस वक्त, ना करें तो बेटर है। एनीवे ठीक है, तो भाई बहुत मेजर एरिया है, उनको अफेक्ट करा है, उन्होंने टारगेट करा है। और ट्रंप ने तो एक वर्ड यूज करा है, ऑब्लिटरेटेड, है ना। ऑब्लिटरेटेड यानी भाई धज्जियां उड़ा दी हैं उस जगह की, बिल्कुल उन्होंने दिखा दिया है कि भाई तुम कुछ नहीं हो हमारे आगे, है ना, ऐसे करके दिखा दिया उन्होंने। और ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है इस वॉर में, ये कंप्लीटली गेम चेंजिंग मूव है जो इन्होंने कर दिया आज। ये मतलब जो गेम ओवर होता दिख रहा है अब ईरान का, साफ सीधी बात है, अब हो गया जो होना था, जितना डैमेज कर सकते थे। अच्छा अल्टीमेटली क्या है, मुझे लगता है भाई यूएस अपना ही बंदा बैठाएगा ईरान में घूम फिर के, कोई ऐसा बंदा अपना, मतलब ये नहीं कह रहा यूएस का बंदा बैठेगा, बट ऐसा बंदा जो यूएस की बात माने। अल्टीमेटली क्या होना है, पीस टॉक्स ही होनी है, और इनका कोई आदमी जाके इवेंचुअली टॉक करेगा, बातें होंगी और फिर मान जाएगा जो भी शर्तें हैं, ठीक है। न्यूक्लियर पावर बनने का इनका जो सपना है वो तो पूरा हो नहीं पाएगा, ये तो भाई साफ सीधी बात है। वेरी वेरी क्लियर कट, इट लुक्स इम्पॉसिबल दैट Iran will someday become a nuclear war, at least with Israel and US there in the world for them. It looks like a monumental task for them. It is an impossible task. Now, with the attack on Kharg Island, it looks like they are trying to pressurize Iran to stop you know बॉदरिंग शिप्स इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, अगेन मैंने आपको बताया दुनिया का 20% जो ऑयल है, 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल, इट गेट्स एक्सपोर्टेड थ्रू दैट एरिया, है ना। अगर ईरान का उस पे टेरिटोरियल एक्सेस है, उन पानी पे, उन वाटर्स पे। अच्छा और नीचे ज्यादा दिख रहा है भाई, एक ट्रेल सेट कर दूं कि शॉर्ट पे कर देते हैं, देखा जाएगा। ठीक है, तो ईरान का उन टेरिटोरियल वाटर्स पे एक्सेस है, और दे विल दे आर यूएस इज ट्राइंग टू प्रेशराइज देम कि भाई प्रेशर डाल के वो ये बता रहे हैं कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो हम दिखा देंगे तुम्हें कि भाई हम क्या हैं, और यहाँ पर हम अटैक कर देंगे तुम्हारा जो खार्ग आइलैंड है, यहाँ पे तुम्हारा शिप्स का आना जाना रुक जाएगा, रेवेन्यू इफेक्ट हो गया तुम्हारा। सबसे बड़ी बात देखो भाई, शॉर्ट लगाते ही लॉन्ग आने लग गया है वो। इतना डिफिकल्ट है इस वक्त प्रेडिक्ट करना मार्केट को। मैंने एंट्री देखो किस पॉइंट पे ली है, 70,661 पे लिया मैंने, वहां से ऊपर चला गया एकदम से। वेरी रिस्की, वेरी रिस्की फेज इन द मार्केट राइट नाउ। खैर करने पड़ते हैं ट्रेड, आप लोग आते हैं दिखाने के लिए भी करने पड़ते हैं, और मुझे ऊपर जाता दिख भी रहा था, सही बताऊं तो। एक सेकेंड मुझे तो इसको क्लोज कर दूं इससे पहले ज़्यादा लॉस हो।
$2 का लॉस हो गया गाइस। एनीवे, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई, खार्ग आइलैंड पे जो चल रहा है, ऑब्लिटरेटेड वर्ड का यूज करा गया, मतलब भाई बिल्कुल ही परकच्छे उड़ा दिए उन्होंने उस एरिया के, उनके कहने के और उनके कहने के हिसाब से ईरान जो है वो थोड़ा प्रैग्मेटिक बिहेवियर दिखा रहा है कि हाँ नुकसान हुआ है, इतना भी नहीं हुआ है, ऐसे करके दिखा रहा है, बट हुआ बहुत होगा आई एम श्योर। और ये एक चेकमेट वाला मूव है जो बेसिकली यूएस ने चल दिया है। उन्होंने कह दिया कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे तुम करोगे कुछ भी, तो हम यहाँ पर आपको खार्ग आइलैंड पे करेंगे, तो तुम प्लीज वो करना बंद करो, हम यहाँ भी बंद कर देंगे। कंट्रोल देखो भाई, एट द एंड ऑफ द डे यूएस सुपर पावर है, उनके पास ही है, दे हैव वेपन्स ऑफ यू नो ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड वेपन्स है उनके पास कि ईरान तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, मैं सही बताऊं, है ना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट अल्टीमेटली ईरान हैज टू कम एंड सिट एट द टेबल एंड डिस्कस a peace treaty. That is the bottom line. By hook or by crook, this is only what will happen eventually. So as soon as that happens, the better for Iran, because otherwise they will be reduced to ashes. Otherwise they will be in a position from when it will be very difficult to recover their economy as well, right? ट्रम्प और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कभी भी ये नहीं चाहेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज इफेक्ट हो। खार्ग आइलैंड पे अटैक करके उन्होंने साफ साफ मैसेज दे दिया है टू ईरान दैट इफ यू आर गोइंग टू ब्लॉक शिप्स इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, वी विल अटैक खार्ग आइलैंड। और खार्ग आइलैंड इज राइट वेयर इट हर्ट्स देम द मोस्ट, है ना। जो होता है ना कि बहुत ज्यादा चुभने वाला जो लॉस है ना, वो उनको खार्ग आइलैंड वाला हुआ है आज, चाहे वो दिखाएं चाहे ना दिखाएं। तो इट्स अ वेरी डेवस्टेटिंग ब्लो फॉर ईरान जो आज हुआ है। एंड इवेंचुअली जितनी जल्दी ये लड़ाई सॉल्व होगी, जितनी जल्दी ये कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व होगी मार्केट में, उतनी जल्दी आप एक बुलिश पैटर्न देखना एक्सपेक्ट कर सकते हो, बीटीसी एक बुलिश रन पे जा सकता है। नहीं जाएगा, नहीं सॉल्व होगी लड़ाई जल्दी। वैसे अभी ऐसा हो सकता है कि 1-2 हफ्ते लड़ाई और चले, ईरान लड़ रहा है, फॉर देम इट्स ऑलरेडी अ लॉस्ट बैटल टू बी ऑनेस्ट, राइट। बट दे आर फाइटिंग, दे आर अटैकिंग यूएस के ऑफिसेज, और है ना ये बातें कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस, गूगल का ऑफिस, जितने भी कंट्रीज में आसपास के हैं, मिडिल ईस्ट के, बहरेन में हो गया, कुवैत में हो गया, यूएई में हो गया, सऊदी अरेबिया में हो गया, इनको हम डिस्ट्रॉय करेंगे, ऐसा करके उन्होंने बोला हुआ है। बट ये कुछ भी नहीं है, जो डैमेज यूएस कर सकता है और जो डैमेज ये लोग कर रहे हैं उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो आप लोगों के मामले में देख लो, कितने लोग किल हुए हैं, कितने लोग मरे हैं ईरान में, और कितने लोग मरे हैं यूएस के सोल्जर्स हैं, कितने इजराइल में मरे हैं। कुल मिला के मेरे को लग सकता है, ऐसा लगता है कि 20-22 लोग भी नहीं मरे यूएस और इजराइल के मिला के। और चलो ज्यादा भी मर गए, 25-30 ले लो एक बार को, लेकिन उनके तो भाई कम से कम 1500 लोग, और ये ऑफिशियल नंबर्स बता रहा हूं मैं, अनऑफिशियल नंबर्स तो कितने भी हो सकते हैं, है ना। तो भाई जितनी जल्दी लड़ाई सॉल्व होगी उतना अच्छा। आज जो हुआ है वो बहुत डेवेस्टेटिंग ब्लो है, इसलिए आज का टॉपिक ये है कि खार्ग आइलैंड पे इन्होंने अटैक कर दिया है। खार्ग आइलैंड बहुत ही दिल के करीब है ईरान के, 90% उनकी कंट्री का ऑयल जो है ना वो वहीं से एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। बहुत सिग्निफिकेंट ब्लो है उनके लिए, और ऑयल एक्सपोर्ट, ऑयल उनके लिए नंबर 1 एक वो है, क्योंकि ऑयल की वजह से ही उनको ज्यादातर रेवेन्यू आता है। तो अगर एक तो ऑयल का उनकी रिफाइनरी और जितने स्टोरेज फैसिलिटीज हैं, जितना उनका शिपिंग फैसिलिटीज हैं वो डिस्ट्रॉय हुई होंगी, और साथ ही साथ रेवेन्यू जो उनको आता है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो दोनों एक तीर 10 निशाने हैं, दो भी नहीं है, इतने निशाने हैं कि ईरान का तो सब कुछ लुटपुट जाएगा भाई, अगर ये खार्ग आइलैंड पे थोड़े बहुत और अटैक कर देंगे, ठीक है। तो आई होप ये सबको समझ आ गया होगा। किसी को कोई सवाल है खार्ग आइलैंड और यूएस ईरान इजराइल वॉर से रिलेटेड तो पूछ लेना, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस वॉर, डू गो अहेड एंड आस्क। और बात रही भाई ट्रेड की, बहुत डिफिकल्ट है आज ट्रेड करना। आप देख ही रहे हो, मैं लगाता हूँ $4, $4, $2 ऊपर चला जाता है वो।
तो बहुत डिफिकल्ट है इस वक्त ट्रेड कोई भी साइड चूज करना, क्योंकि मार्केट स्टेबल सी ही है, फर्क ज्यादा देखने को मिल नहीं रहा है, प्रॉफिट ज्यादा नहीं हो रहा है, लॉस भी ज्यादा नहीं हो रहा है। तो क्या मजा नहीं है कोई ट्रेड में, प्रॉफिट लॉस कुछ तो हो, है ना। वो नहीं हो रहा है। एक बार परसेंटेज चेंज देखना चाहो देख सकते हो, 7.61% का चेंज है बेरा यूएसडीटी में, लेकिन ये भी 8 8.5% बस, इससे ज्यादा नहीं गया है ये भी अब हो गया है इसका जो होना था। ठीक है, ये कम ही हो रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, बहुत कम कम कर रहा है, इतना ज्यादा नहीं कर रहा। तो किसी पे भी ट्रेड लगाना मुझे बढ़िया नहीं लग रहा है। हाँ, रिजॉल्व यूएसडीटी पे एक ट्रेड लगाया हुआ है गाइस बाय द वे मैंने, और ये मुझे देखो, अगर आप, ये तो चार्ट बहुत क्लियर कट बता रहा था इसलिए लगाया था ट्रेड, दिखा देता हूँ। रिजॉल्व यूएसडीटी का एक बार चार्ट देख लेना आप लोग, ये देखो 60 मिनट चार्ट देखो, ये देखो, इट टेल्स अ पिक्चर ऑफ इट्स ओन। तो मैंने एंट्री ली थी 0.07351 पे, अब देखो 7245 पे आ गया है ना, 7351 पे लगाया था, 7246 पे आ गया और शॉर्ट गया था मैं, तो $6 मैंने कमा लिए। शायद और लगाए होते तो और भी बना लेता, मन तो है और ज्यादा लगाने का, लेवरेज के साथ लगाने का, देखते हैं लगा के क्या होता है। आओ, थोड़ा सा रिस्क लिया जाए लाइफ में। 0.07281 पे एंट्री हो गई है।
I welcome user 266551 to the live stream, and I also welcome user, क्या नाम है, 148286 to the live stream. Thank you for joining in. And I also welcome user 330740. देखो भाई, आज हम बात कर रहे हैं स्पेशली, देखो भाई पीएनएल बढ़ घटता हुआ एकदम से, और सारा जो प्रॉफिट 7 8 5 6 डॉलर का बना भी था वो घट के लो आ गया है। खैर एनीवे, आज हम बात कर रहे हैं भाई खार्ग आइलैंड की। एक सेकेंड, मुझे 1 मिनट चार्ट देखने दो पहले इसका। ये देखो बढ़ना स्टार्ट हो गया है, इसलिए हो रहा है। खो खो फाइनली ये बढ़ना स्टार्ट हुआ रिजॉल्व। हाँ, देखो भाई खार्ग आइलैंड की बात कर रहे हैं। खार्ग आइलैंड पे आज यूएस ने अटैक कर दिया है, और खार्ग आइलैंड जो है वो ईरान का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सिग्निफिकेंट इसलिए क्योंकि 90% का उनकी जो कंट्री का ऑयल है वो वहां से एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, वहां पर रिफाइनरी है, वहां स्टोरेज फैसिलिटीज हैं, वहां पे कार्गो शिप्स अप लोडिंग होती है, बहुत कुछ है, मिलिट्री भी वहां पर इंस्टॉल्ड है उनकी। तो बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और एक डेवस्टेटिंग ब्लो है ये ईरान के लिए। और ये मैं एक तरह से कहूंगा कि ये चेकमेट कर दिया है। अब चेकमेट कर दिया है कि भाई अब अगर तुम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में तुम अगर शिप्स का आना जाना रोकोगे, तुम कह रहे हो ना बड़ा कि तुम शिपों पे आग लगा दोगे, जाने नहीं दोगे, क्योंकि अगर ईरान को प्रॉब्लम आ रही है, ईरान का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई अगर हमें प्रॉब्लम आ रही है ना तो हम भी किसी को चैन से जीने नहीं देंगे थोड़े दिन। तो यूएस ने कह दिया कि ठीक है लाले, अगर तुम थोड़े भी दिन ये और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे दोबारा कोई हरकत करते हो रोकने की, किसी भी एक्सपोर्ट्स को, कंटेनर्स को, शिप्स को, तो तुम्हारा जो ये खार्ग आइलैंड है इसका हम तहस नहस कर देंगे। अगर हमने ये कर दिया, डोनाल्ड ट्रम्प ने ना एक वर्ड यूज करा है आज अपने ट्वीट में ये अनाउंस करने के लिए दुनिया में, ऑब्लिटरेटेड। ऑब्लिटरेटेड का जाके एक बार मतलब आप गूगल करो, तहस नहस कर दिया है, उनका कहने का मतलब है रिकवर नहीं कर पाओगे, ऐसी हालत कर देंगे, और कर दी है। पर ईरान जो है वो थोड़ा प्रैग्मेटिक अप्रोच अपना रहा है। वो ऐसे कह रहा है कि भाई हाँ ठीक है, थोड़ा डैमेज हुआ है ना, डैमेज बहुत ज्यादा हुआ है, ये चेकमेट है, ये एक किलर ब्लू है जिसे मैं कहूंगा इट इज गोइंग टू हैव अ ड्रास्टिक इम्पैक्ट ऑन द आउटकम ऑफ दिस वॉर, है ना। यहां से वॉर जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अब इट, ऑल्दो वो यूएस के फेवर में ही थी, अब कंप्लीटली हो गई है। अब देखो भाई घूम फिर के क्या होना है, घूम फिर के बस एक ही चीज होनी है, ये बैठेंगे जाके पीस टॉक्स के लिए, टेबल पे बैठेंगे, बातचीत होगी, और इवेंचुअली आउटकम निकाला जाएगा। इनको इनकी शर्तें माननी पड़ेगी यूएस की, और फिर बातें आगे बढ़ेंगी। यूएस कहेगी कि भाई आगे से तुम ध्यान रखना, हम अपना आदमी बिठाएंगे, जो रेजीम चेंज कह लो नहीं होगा, जो भी होगा, सरेंडर इन्होंने नहीं करना ईरान ने, है एट द एंड ऑफ द डे। तो भाई कहने का तात्पर्य ये है, इससे इम्पैक्ट क्या होगा क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, जल्दी हमें चाहिए कि भाई ये वॉर खत्म हो, है ना। जब तक ये वॉर खत्म नहीं होगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का मैटर सॉल्व नहीं होगा, ये खार्ग आइलैंड को दोबारा अटैक कर सकते हैं। दोबारा अटैक करा और भी ज्यादा किलर ब्लो होगा। दूसरी बात, एक एलपीजी सिलेंडर्स की शॉर्टेज की बात हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली इन इंडिया, क्योंकि वो नेचुरल गैस जो है, वो लिक्विफाइड नेचुरल गैस, वो आती है यहाँ पे मिडिल ईस्ट से होते हुए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से होते हुए इंडिया में। तो इंडिया में इसलिए आप लोग आजकल देख पा रहे होंगे एलपीजी सिलेंडर्स की शॉर्टेज हो रही है। अब शॉर्टेज हो रही है तो इंडियन शिप्स को जो है बेसिकली आने जाने दिया जा रहा है। तो गुड न्यूज ये है फॉर इंडियंस दैट आज भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से 2 इंडियन फ्लैग्ड शिप्स को जाने दिया गया है टुवर्ड्स इंडिया, एक्सपोर्ट रुका नहीं है। And I think this is the positive sign that we see in the world, when it comes to keeping a uh, good relationship with all the countries, not choosing sides. काफी लोग कहते हैं कि इंडिया कोई साइड क्यों नहीं चूज कर रहा है, इंडिया क्यों नहीं, इराक के, ईरान के जब खमेनी की डेथ हुई तो क्यों नहीं इंडिया ने बोला, क्यों नहीं इंडिया कंडेम कर रहा है इन अटैक्स को, क्यों नहीं इंडिया यूएस की साइड ले रहा है, क्यों नहीं इंडिया ईरान की साइड ले रहा है, इजराइल की साइड ले, जो भी है भाई, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक आफ्टर योर ओन सेल्फ एट
that is the first thing I would say in a war. I'm not a war expert or anything, or a foreign relations expert, but it's important in today's world to look after your population, to look after your countrymen. And if that means not taking sides, then so be it, right? And if had India taken the side of the United States or Israel, probably Iran would have not let these LPG cylinders and LPG gas containers pass through from the Strait of Hormuz and come to India. We would have had a massive crisis here, right? And had India taken the side of Iran, इंडिया काफी ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो वो भी अल्टीमेटली इफेक्ट हो सकता था। ट्रम्प का कुछ नहीं पता है, वो उधर टैरिफ्स लगा देते अगर हम इधर साइड लेते हैं। पहले हम देख चुके हैं कि कैसे इंडिया ने रशियन ऑयल ले रहा था इंडिया, तो प्रॉब्लम हो रही थी यूनाइटेड स्टेट्स को। ट्रम्प बार बार टैरिफ लगा दे रहे थे क्योंकि हम रश उनको लग रहा था कि हम रशिया यूक्रेन के वॉर के बीच में रशिया से ऑयल क्यों ले रहे हैं, जबकि सारी कंट्रीज आर अगेंस्ट रशिया। तो it's very difficult to manage your position during times like these, and it's very important that आपका काम चलता रहे, है ना, and आपकी population suffer ना करे because of this war that you are not even involved in, right? So I hope you would have understood what I'm trying to say here. And then again comes the cryptocurrency part of it. We need to get normalcy back to this market. That normalcy will only come once we exit this situation of war, because until that happens, uh, एक बुलिश मोमेंटम जो बीटीसी को मिल सकता है वो नहीं मिलेगा। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है अब, क्योंकि इट्स हैड अ रोलर कोस्टर ऑफ अ स्टार्ट टू दिस ईयर। आई मीन इट्स हैड अ रफ स्टार्ट, टू बी ऑनेस्ट। January was bad, February was even worse, March we have entered a war. So where does the market find the window to recover? And obviously we know BTC will go to good heights in the next few months or so, probably towards the closing end of this year. But एक window of opportunity बहुत important है market के recover करने के लिए, वो नहीं मिल पा रहा है। हर बार देखो तो आप कुछ ना कुछ चले ही जा रहा है। और आप जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स बहुत ज्यादा इफेक्ट होती हैं विद इवन द माइन्यूटेस्ट ऑफ द न्यूज इन टाउन। सेंटिमेंट पे चलती है, इमोशंस पे चलती है मार्केट। तो जब तक ये मार्केट में आप वॉर चल रही है स्पेशली, वो नहीं सॉल्व हो जाती, आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि मार्केट बुलिश रन पे जा सकती है या ऊपर जा सकती है। ऑलरेडी अगर आप बीटीसी को देखें तो बीटीसी इज एट 70,000 समथिंग, राइट? 70-71,000 ऐसा चल रहे है। पर एक क्लियर कट ब्रेकआउट या एक क्लियर कट डायरेक्शन नहीं समझ आ रहा है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। वो बुलिश रन कब आएगा? बातें तो बहुत हो रही हैं, पर कब जाएगी वहां पे, है ना? ये नहीं समझ आ रहा है। क्या लो पे जा चुका है, जो जो बॉटम को हिट करना था उसको कर चुका है? ये भी नहीं समझ आ रहा है। वेरी डिफिकल्ट टू से एट दिस पॉइंट इन टाइम, बट I would say अभी तक I think 51-49 market should go up from here, but I could be wrong as well, right? But because वही मैं बता रहा हूँ, क्यों मुझे बोलना पड़ रहा है 51-49, क्योंकि that market is such इतनी volatile है इस दौरान। It could head in either of the directions and the margins are very small. You could choose one side, it could go in the other side and you would have losses, right? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब मॉनिटर करना, और बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ते रहना रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर वॉर। भाई ट्रम्प यूएसडीटी फिर से पंप ले रहा है, एक ओपन लॉन्ग करके अपन लगा सकते हैं। नहीं नहीं, फिर से नीचे आता दिख रहा है ये तो।
चलो भाई 4.079 पे एंट्री लिया, अब तो नीचे ही आना है क्योंकि मैंने एंट्री जो ले ली। ये देखो भाई, तुरंत तुरंत लॉस, तुरंत लॉस। शायद मैंने 2-4 सेकेंड और वेट करा होता तो नहीं होता ये लॉस। आई वेलकम यूजर 245320 टू द लाइव स्ट्रीम। ओके भाई, टाटा बाय बाय। आने से पहले चले जाते हैं लोग। ना 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 ना, बहुत वोलेटाइल मार्केट है भाई, बहुत ज्यादा। अब देखो शॉर्ट जाऊंगा तो शॉर्ट नहीं जाएगा ये। शॉर्ट जाते हैं तो शॉर्ट नहीं जाता। मेरी एंट्री है 4.0। अरे देखना कितनी कहाँ एंट्री हो गई है। यहाँ पे एंट्री हुई है, यहाँ से कहाँ नीचे जाएगा यार। माउस में थोड़ी गड़बड़ी आ रही है भाई आज। चलो खैर, नज़र बना के रखूंगा इस पे। लगता तो नहीं मुझे और नीचे जाएगा, जाएगा ऊपर ही यहाँ से अब थोड़ा बहुत। कल इस पे ऑलरेडी बहुत पैसे बनाए थे। आज देखते हैं बना पाते हैं नहीं इसके शॉर्ट पे या नहीं। आओ एक बार ट्रैकर देखें वॉर का। ये देखो फिर उठना स्टार्ट हो गया, तो यहाँ से फिर हमें लॉस।
भाई एक और रेड कैंडल देखने को मिल रही है और तभी थोड़ा प्रॉफिट बढ़ रहा है। जितनी ये कैंडल्स बड़ी होती जाएंगी ना उतना ज़्यादा मैं प्रॉफिट में जाऊंगा। थोड़ा सा वेट करूंगा, देखता रहूंगा कैसे ये कैंडल्स प्रोग्रेस करती हैं इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मिनट्स। मेरे माउस में आज थोड़ी दिक्कत आ रही है यार गाइस, एंड आई थिंक इट्स अ बैटरी इशू मोर देन एनीथिंग। चलो भाई नीचे आया, थोड़ा प्रॉफिट बढ़े। फिर ऊपर चला गया तो एक दो और रेड कैंडल्स मेरा काम कर देंगी, बट देखना पड़ेगा वो कैंडल्स कब आएंगी। वरना तो 3-4 डॉलर का ही प्रॉफिट है लाले। ओहो। अल्टीमेटली सब यहीं से होता है भाई। BTC इज द डैडी ऑफ देम ऑल, एंड चाहे ट्रम्प USDT हो, स्पेशली वन ऑफ द यू नो मेजर ट्रम्प कॉइन जो ट्रम्प ने लॉन्च करा वो कॉइन है तो कोई इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बट अगर और नीचे जाएगा तो शॉर्ट जा सकते हो अब आप लोग भी। मुझे नहीं लगता ये उठेगा अब। इट्स अ वेरी seller oriented market at this point in time, and you can see how it is doing. These red candles are building up one after the other. Looks like it will fall below 4.00 as well, or maybe not. क्या लगता है, $5 लेके निकलना चाहिए? थोड़ा सा रिस्क लेते हैं यहाँ पे, वेट करेंगे।
यार आपने स्ट्रीट से बाहर मुझे नहीं लगता ये और अब प्रॉफिट कोई देगा हमें। क्लोज करके 4-5 डॉलर कमा के अपने। सीआरबी एक बार देख सकते हैं। हम्म। Chalo, while I'll take a short break. There haven't been much people here on zbit.com live with Karan today. That's okay. That's not an issue. But I'll take a short break. When I come back, I'll probably get my batteries of my mouse replaced as well, and I will also look to come back with some more trades in the next 1 hour or so. That will be the last hour of my live stream. It's been a pleasure having all of you here. I'll take a short break. When I come back, stay tuned on zbit.com live, because I will be talking about the Iran Israel war, the Iran Israel US war, and what's the latest update on it. Apart from that, I've also obviously talked about the Kharg Island attack on Iran by the United States of America, and Trump obviously boasting about it on Twitter. And I'll be making more trades as well. So stay tuned only on zbit.com live. Do not go anywhere. I'll be back in a few minutes. Stay tuned.
अब हुआ ना शॉर्ट, तो गाइस थोड़ा सा माउस में इशू आ रहा था, सेल चेंज करा, सॉल्व। नाउ आई एम यू नो वर्किंग विद अ परफेक्टली फाइन माउस। अब मैं देख पाऊंगा सारे अपडेट्स और सारे ट्रेड्स भी देख पाऊंगा। थोड़ा दिक्कत हो रहा था माउस की वजह से। तो चलो भाई, ये कुछ ट्रेड करे हुए हैं सेट ऑलरेडी रिजॉल्व पे, ये भी $2 के लॉस में 0.7248 पे इंटर करा है। रिजॉल्व को देख लेते हैं, बढ़ गया है ये वहां से थोड़ा। थोड़ा सा और वेट करते हैं, देखते हैं नीचे जाता है ऊपर जाता है, बट अब मुझे लग रहा है कि इसमें ये ग्रीन कैंडल एक पहली आई दिखी है, तो लेट्स सी, थोड़ा सा वेट करके देखते हैं। नेवर माइंड, बाकी को देखते हैं। बीटीसी अच्छा गिरा है बीटीसी तो यार। आई वेलकम यूजर 350139 फ्रॉम नाइजीरिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन ऑन माय लाइव स्ट्रीम। We are looking at Bitcoin's price, and today the Kharg Island has been attacked by the US, and that also has an effect on the cryptocurrency market. Hopefully, this is a checkmate from President Donald Trump, and this war could possibly now end faster than we all are anticipating. I think I'll look to close this trade out first. Right, and the market, it looks like, is very stable at this point in time. I welcome user 635573 to the live stream. The market, it looks like, is very stable this point in time, because ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिला है ट्रेड्स में भी। $4-5 ऊपर, $2-3 इधर, $2-3 नीचे, इससे ज़्यादा कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। स्टेबिलिटी सी लग रही है। देर इज लुक्स लाइक देर इज अ वेरी स्टेबल मार्केट at this point in time. If there is a good trade, then I will definitely share on my Telegram group. Right now, I don't think there is any good trade that I have with me, but I hope you will still stay tuned on zbit.com live with me and interact with me. User from Nigeria, user 350139. How are you? How are you doing? Welcome to the live stream. Have you made your first deposit on zbit.com? Moral bankruptcy. इनबॉक्स तो हमारे में नहीं है, आई थिंक। मार्केट बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है, वरना ट्रम्प यूएसडीटी पे मैं लॉन्ग जाना चाहता था, क्योंकि ऐसे करते करते ये कल ऊपर गया था। और भी जा सकता है, बट आज मैं थोड़ा अनश्योर हूँ। कल तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर कट साइंस थे और उसका हमने फ़ायदा भी उठाया है, ऐसी बात नहीं है।
आज भाई ज़्यादा लोग हैं नहीं लाइव पे, तो थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि सुस्ती का माहौल है थोड़ा आज। क्या आप सभी लोगों को थोड़ा ग्लिच, क्या सभी लोगों को थोड़ा ग्लिच, क्या ट्रेड लिया जाए एक और? क्या लगता है गाइस? सारे ही नेगेटिव में है, परसेंटेज चेंज अगर आप देखो। पॉइंट 2479 पे एंट्री आएगी। ठीक है, देखते हैं कितना गिरता है। प्रतीक जी, वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। आज काफ़ी लोग
हमारी लाइव स्ट्रीम पे कम है। प्रोबेबली लोग अपना वीकेंड एंजॉय कर रहे हैं आज, और आप भी एंजॉय करते ही दिख रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपने आज कोई ट्रेड लिया होगा किसी भी प्लेटफॉर्म पे, नॉट जस्ट ऑन zbit.com, बल्कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे। मार्केट में भी थोड़ा स्टेबिलिटी देखने को मिल रहा है। एक सेकेंड आप मुझे दीजिए। मार्केट में भी थोड़ा स्टेबिलिटी देखने को मिल रहा है, क्योंकि ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिख रहा है। स्टेबल होती हुई दिख रही है मार्केट। मूवमेंट अगर आ भी रहा है तो $1-2 प्लस माइनस इतना ही चल रहा है। तो बड़ा स्ट्रेन सा, वियर्ड सा मार्केट है जो आज हम देख रहे हैं। इथीरियम भी अगर आप देखोगे तो 2075 पे है। होपफुली यहाँ से ऊपर जाए, लेकिन ऑब्वियसली वो डिपेंड करेगा बिटकॉइन पे भी। बिटकॉइन अगर ऊपर जाएगा तो इथेरियम को साथ खींच ही लेगा। लेट्स सी कैसा रहता है इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मिनट्स। ट्रेड्स करना थोड़ा डिफिकल्ट एट दिस पॉइंट इन टाइम, बिकॉज मार्केट इज वेरी volatile, very unpredictable at this point in time, and although it looks very stable, but difficult to say in which direction it will go from here on, whether it will fall slightly or whether it will go upwards. 29792
I welcome user 674-712 to the live stream all the way from Indonesia. Thank you for joining in. I hope you've joined my Telegram group as well. It is by the name of zbit.com live with Karan. And the link for it is at the very bottom. When you tap on more, you will see join Telegram group. So join my Telegram group and just let me know, send me your user IDs. I will look to send you good trades, good signals on Telegram. Denu02 from Indonesia, thank you for joining. How are you? How are you doing? Have you made your first deposit on zbit.com? Denu, have you made your first deposit on zbit.com? Horrible trades, not going in either of the direction, not going up, not going down. I'm good. I'm also good. And I'm just asking you out of curiosity, have you made your first deposit on zbit.com? Denu, have you made your first deposit on zbit.com? If not, there is a deposit offer going on, and you can get 20,000 Pepe coin or 20,000 Shiba Inu coins absolutely free on your first deposit. But remember, you have to use the deposit option on my live stream windows bottom. Right below my live stream, you will see a deposit option. Tap on it, then make your first deposit, and you can get from my side 20,000 Pepe coins or 20,000 Shiba Inu coins absolutely free of cost. Right? Also, Denu, please join my Telegram group. There I share trade signals that can earn you lots and lots of profits. Right? It is by the name of zbit.com live with Karan. At the bottom, you will see the option of more. Tap on more, then you will see join Telegram group. Join my Telegram group. You will be able to see my Telegram group zbit.com live with Karan. Right? Please do join it for all the latest signals, all the latest news related to cryptocurrency, for deposit offers, exclusive rewards, all of those things, right?
Welcome user 547300 to the live stream from Nigeria. How are you? How are you doing? How is Nigeria? User 547300, thank you for joining in from Nigeria. How are you doing? How are you? Have you joined my Telegram group? zbit.com live with Karan is my Telegram group. Please do join it. Last 20-25 minutes here left on my live stream, and I hope that today's topic, the attack on Kharg Island in Iran by the United States of America, you've understood the topic, you've understood how the United States has almost, gone on to do a checkmate on Iran, and it very much looks like it was a devastating blow to them, because it is one of the most important locations for them, because 90% of the oil that they export Iran, right, it goes through Kharg Island. And uh, it has a lot of economic implications as well, because a lot of revenue comes from that export. Their shipping line is there, their storage facilities are there, their cargoes are there, all the loading happens from that spot, and that place has been targeted and obliterated is the word that President Donald Trump has used to you know d- uh, you know explain about this particular attack on Kharg Island, because Iran was obviously trying to exert pressure on the world, saying that if we are under threat, if we are under any kind of attack, we will also not let anyone else be at peace, right? That is why they were trying to dominate and attack all the ships that are passing through the Strait of Hormuz, from where one fifth of the world's oil is exported. So that pressure was completely taken care of by the United States of America today, because they have attacked the Kharg Island, that is of huge prominence when it comes to Iran, and their exports and trades that they make in the Middle East or to any part of the world or per se. I hope user 547300, you made your first deposit on zbit.com. If not, there is a deposit offer going on. You can get from my side 20,000 Pepe coins or 20,000 Shiba Inu coins on your first deposit. But for that, you will have to also join my Telegram group. It is called zbit.com live with Karan. Tap on more, join my Telegram group, and also make your first deposit on zbit.com using the below deposit option. Just below my live stream window, there is this deposit option. Tap on it and then make your first deposit. Then I will give you 20,000 Pepe coin or 20,000 Shiba Inu coins absolutely free of cost. So I hope you are going to make that first deposit soon. User 579128, thank you for joining in from India. How are you doing? Have you made any trades today? Very risky market, by the way. And I would say that it's not, it's less of risky but more of stable at this point in time. There is not much that's going on. Even the profits that I've made today have been just $1 or $2 or $3, and the losses that I've made have also been around pretty much the same amount, right? So there hasn't been much fluctuation, and there are not many days like these in the market.
So you just need to sit back and relax and keep your eyes open, watch the market, watch BTC, watch other coins how they are performing. If there is a clear cut opportunity of a breakout, I will definitely let you know on my Telegram group. Now, if you've not joined my Telegram group, please join it. zbit.com live with Karan is the name of my Telegram group. मोर पे क्लिक करोगे नीचे जाके, फिर ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप करोगे तो टेलीग्राम ग्रुप पे पहुंच जाओगे मेरे. ज्वाइन कर लो तो मुझे बता देना एक बार. Just let me know once you've joined. भाई लाइव स्ट्रीम पे आते हो यार, थोड़ा हेलो हाय कुछ comment वॉमेंट कर सकते हो. If you want to make any comment you can make on, if you have any questions regarding today's topic, regarding the US Israel Iran war, regarding cryptocurrency, regarding Bitcoin, regarding any other coin, please go ahead and ask me on the chat just below you where it says say something. Type your question and ask me whatever you want to ask. Right, any more questions that you have, any question that you want any answer to, any exclusive offers related question, deposit offer, withdrawal related issue, anything that you have, I'll be happy to answer. I'm coming towards the close of my live segment. If you want to ask anything, kindly go ahead and ask now. This is my tracker. I am looking at all the country continuing as normal despite war. User 547300, no questions, no doubts, all clear. No questions, guys. यूजर 563028, बहुत बहुत स्वागत है लाइव स्ट्रीम पे. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन. आज का टॉपिक था खार्ग आइलैंड के बारे में, जिसको डिस्ट्रॉय कर दिया है अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ईरान में, यूएस ने. और ये बहुत डेविस्टेटिंग ब्लो है उनके लिए. ये हमारा आज का टॉपिक था. Right, I'll take a short, quick break, 2 minute break. I will be back in the next few minutes. Stay tuned on zbit.com live. Since all of you are not asking any questions, I'll take a break now. 2 minute break.
Welcome back to the live stream. Since you've not been asking any questions, we are now coming towards the close of my live segment. User 674157, thank you for joining in on my live stream. We are coming towards the close of my live segment. The topic of today's discussion was, of course, the Kharg Island attack that US has done on carried out on Israel, and it could very well be a devastating blow for them, and it could very well mean that I welcome user 613032. It could very well mean that it is absolutely checkmate from the side of US, because Iran was trying to stop all the ships and block all the ships routes in the what is it called, Strait of Hormuz, right? So now the United States has gone ahead and said that fine, if you want to do that, you can do that now, but we will keep attacking Kharg Island. And Kharg Island is one of the top most priorities for Iran, because 90% of their oil exports happen from that place. There are storage facilities over there. There is shipping facilities. There are cargo facilities. All the loading happens from there, and so it is of very prime importance for Iran. Now, it means that Iran is obviously on the back foot. However, they are not showing that attitude. They are very much pragmatic about it. And today, while we come to the end of this live session, we are also looking the impact this could have on this war and subsequently the cryptocurrency market. I'm coming towards the close of my live segments. I'll be here for the next 7 8 minutes. If you have any questions, guys, please go ahead and ask me. I will be heading out in the next 7 8 minutes, and I'll be putting to close this very topic that is very much about the Iran Israel US war and the Kharg Island attack. So I'm coming towards a close. And lastly, I would say, if you've not joined my Telegram group, you need to join it, because otherwise you are missing out on a lot of signals as well. I will also be seeing you all tomorrow at very much the same time at 5:30 to 9:30 IST. And tomorrow I'll be here with a newer topic, a much more engaging topic. Hopefully, something happens overnight, because I feel like some of our topics have kind of become repetitive, right? So it's important that you join the live stream, you look at me making some trades as well, and lastly, understand the topics that are going on in the world, because those are the topics that we look to bring to you. Cool. Any questions? Next 3 4 minutes, go ahead and ask me. Otherwise, I am ready to head off.
Welcome user 367138 from Indonesia. I am coming towards the close of my live segments. I hope you've made some kind of deposit today and made some kind of trade today. If not, you can obviously see me tomorrow, and I'll be here with a newer topic. You can make a deposit tomorrow. I'll tell you about the deposit offer as well when I come on my live stream tomorrow at very much the same time, 5:30 to 9:30 IST. And with that, I come to a close of my live session today. The topic you guys must have understood today. The topic was the attack by the United States on Kharg Island, and how it is a devastating blow for Iran, right? That was the topic of the day. I really appreciate all of you people joined in today. And user 196199, you've just joined, but I'm coming towards the close of my live segment. Really appreciate if you could join tomorrow as well, at very much the same time. 5:30 to 9:30 is my time for my live stream. I'll be here with a newer topic, and I hope that you guys can join in and make deposits during my live. And also, please do go ahead and join my Telegram group, zbit.com live with Karan. मेरे Telegram group का नाम है, ज्वाइन कर लेना. कल दोबारा मुलाकात होगी सेम टाइम पे. And this is me signing off. Thank you and have a great day ahead. I'll see you all tomorrow at 5:30 to 9:30 IST. Goodbye and take care. Also, do not forget, please keep making more and more trades on zbit.com. It is one of the most safest, secure and transparent apps all across the world. And it is an opportunity for you to make trades, whether it is spot trading, futures trading, any kind of trades that you want to indulge in. You can probably go ahead and make. Now with that, I come towards the close of my live segment. It has been an absolute pleasure having all of you here, and I really appreciate. Thank you for joining in. I will see you all tomorrow at very much the same time, 5:30 to 9:30 IST, with a newer topic. I will be here. Do make sure to join my Telegram group, zbit.com live with Karan. That is the name of my Telegram group. And I'll give you all the latest updates there, all deposit offers, all signals, trade related, and anything latest on the Iran Israel US war as well. I'll see you all tomorrow. Goodbye and take care.